Good morning. Good morning from Kolli hills. वेदर देखो यार, जबरदस्त.
सनराइज पॉइंट। पीछे हमारा टेंट है एंड वी आर हेडिंग ऑन टू द हिल टॉप। आज भैया का ब्रॉडबैंड भी बंद है तो होपफुली विल गेट नेटवर्क एज वेल ऑन द हिल टॉप फॉर एयरटेल एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो कुछ हटके कर रहे हैं भाई। रात की पार्टी के बाद ना हाइकिंग बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट लेट्स सी। एक हाथ में ड्रोन है, एक हाथ में इंस्टा 360। गिरा ना मैं तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ है भी नहीं। ओके प्रॉब्लम स्टेमिना की नहीं है, प्रॉब्लम इंक्लिनेशन की है। वो देख रहे हो वहाँ टेंट है अपना, वहाँ से इतना ऊपर ही आए लेकिन स्टीप क्लाइंब है। ऐसे देखोगे ना आपको पता चलेगा, क्वाइट स्टीप। और हाथ भी फ्री नहीं है ना यार, लौटते टाइम हाथ फ्री रखूँगा। ओह ये चट्टान देखो, ऐसा ये प्रॉब्लम है। स्टैमिना की कमी नहीं है भाई, स्टैमिना तो भर भर के। अरे भाई यू शुड नॉट ड्रिंक लास्ट नाइट व्हेन यू हैव टू हाइक। अरे हो गया मेरा। सो भैया के साथ अभी छोटा सा और हाइक पे निकले। दिस आर दी पेपर plant actually, and this is the supporting tree for it. So it start sprouting like this and then it climbs the tree. So this is basically for supporting the stem. और भाई यहाँ पे you can look on to this जो यहाँ के पेपर की खेती है, ये सारे पेपर प्लांट्स हैं। ओके भैया इज कॉलिंग। भैया फाउंड वन पेपर प्लांट ऑन विच देयर आर पेपर सीड्स। ओके so these are pepper. Yeah. How much time it takes to get matured to pluck? About 8 months. 8 months. Yeah. I'm not sure. Usually they harvest once in a year. And finally on the hilltop. बढ़िया यार, इधर आप सनराइज देख सकते हो यहाँ पे।
और इसी पीक के टॉप से इधर आप सनसेट देख सकते हो। देखो यहाँ पे ना, वही मैं कह रहा था, ड्रोन उड़ाने का फ़ायदा नहीं है। ड्रोन से ना सब कुछ फॉगी मिस्टी आएगा, धुंधला टाइप का, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको उसके आगे, क्योंकि पहाड़ है लेकिन दिख नहीं रहे। और बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे मौसम साफ़ होता है, लाइक फॉर 5-10 मिनट्स। जब तक आप ड्रोन प्रिपेयर करके उसको उड़ाओगे तब तक बूम, फिर से कोहरा धुंध। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ड्रोन को दूर भेजा है और एकदम से बारिश आ गई ना भाई, जब तक बुलाओगे वो पानी पड़ के कहीं नीचे गिर जाएगा। रिस्क है यार, रिस्क तो है। ये देखो कितना सही व्यू है यहाँ से। इस तरफ इट्स क्लियर, मतलब थोड़ा क्लाउडी है लेकिन स्टिल यू कैन सी द सन। इधर कुछ नहीं दिख रहा है, इस तरफ आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। अगर जूम भी करूँगा ना मैं इस पेड़ के आगे, आपको पूरा धुंध दिखाई देगा। तो पहले मैंने सोचा था स्पॉट से ड्रोन उड़ाऊंगा, आई वॉज कैरिंग द ड्रोन एज वेल, बट कैसे, रिस्क है बाबा। बट यार क्या सूदिंग जगह है, एक बार मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप आके यहाँ कैंप में स्टे करिए। रिजॉर्ट में ये फील नहीं आ सकती है। वंस यू स्टे इन दी वाइल्ड ना, you'll come to know how it looks like, how it feels like.